Let's do the next set of functions. So this video I'm making on kinked Ics. Kinked Ics थोड़े tricky भी हैं, लेकिन बहुत important है. अच्छे से कर लोगे तो आगे जाके जब हम choice में इसको दोबारा repeat करेंगे तो बिल्कुल problem नहीं आएगी. So let's see. I will go slowly and let's do them one by one. I will do a few examples with you. So u is equal to minimum of x plus y comma 2x. See, the first thing I want to point out is, of all the kinked Ics, perfect complements is a very small subset. Perfect complements के अंदर हमारे पास fixed ratio होता है. Fixed ratio होता है. हमने उसका वो करा ना, general form. It is u is equal to minimum of x1, x2, where both the powers are 1. Any other form of a min function is not perfect complement. You know, it's a myth. Whenever people see min function, they say it's a perfect complement. ऐसा नहीं है. Perfect complement सिर्फ और सिर्फ इस form का होता है. Perfect complement is only and only of this form with a C and a D here. But उसके अलावा जितने सारे min functions होते हैं वो kinked Ics तो होते हैं, लेकिन वो perfect complements नहीं होते. वो perfect complements बिल्कुल नहीं होते. Perfect complements के लिए ये वाला form satisfy होना has to be there. मतलब it's not important, it has to be there. अगर ये वाला form satisfy नहीं हो रहा है तो वो perfect complement नहीं है. So any kinked Ic may or may not be perfect complement, but perfect complements are definitely kinked Ics. 1. 2. Perfect complements का जो general form होता है, which is this has to be satisfied. It has to be satisfied अगर हमारा curve जो है वो perfect complement है. अगर ये satisfy नहीं हो रहा है तो हमारा curve perfect complement नहीं है. Okay? So now u is equal to minimum of x plus y comma 2x. Step 1. You find out the kink. Kink के लिए जो comma का left side है और comma का right side है उसको आप equate करेंगे. Kink के लिए जो comma का left side है और right side है उसको आप equate करेंगे. So you will say x plus y is equal to 2x, which implies x is equal to y. So in x and y plane, my kink are going to be on a 45-degree lines. This is the line in which my kinks will lie. Kink will lie. ठीक है, तो ये हमारी पहली चीज है. दूसरी बात हम करते हैं कि हमारी दो साइड्स क्या होंगी. उसके लिए I separate it out. Let's say u is equal to first left hand side is equal to x plus y. Now this is a perfect substitute. अगर आपको individually कोई इस curve को बनाने को बोलता तो x plus y में आप ऐसा curve बना देते, है ना? You would have made this curve, then let it be here. The third thing is you put u to be equal to the right hand side, which is 2x. Now remember from our last video, x ये वाला तो neutral है ना? So this utility function is of a neutral, so you make it like this. So आपने क्या किया? आपने सबसे पहले kink निकाला, फिर आपने बोला u is equal to this, उसका आपने curve बनाया, फिर आपने बोला u is equal to this, आपने इसका curve बना लिया. अब आप तीनों को same उसमें लेके आओगे. So u is equal to minimum of x plus y comma 2x. You have figured out the kink are lying on the 45-degree line. You know that you have some straight lines. These are your 2x ka curve ka value. And then you have perfect substitutes. So automatically you have values like this, which are my other curves. Okay. So I have one, which is this kink line. You have these vertical lines and you have these downward sloping lines. Now I have to figure out what to keep and what to discard, है ना? उसके लिए let's take a point. Let's suppose I take a point of 2, 3. At a point of 2, 3, my utility is minimum of 2 plus 3, 5 and 2 plus 2 plus 2 into 2, 4. Minimum is 4. So for a utility of 4, I have a point which is 2, 3. Do I have a point 2, 2?
Yes, 2 comma 2 is also a point. In fact, 2 comma 2 is the point which is lying on the kink. So can I identify this point here? This point here. So this point is 2 here and this point is 2 here. अब 2 comma 2 के साथ मेरा जो point lie कर रहा है वो है 2 comma 3. 2 comma 3 का मतलब है 2 comma 3 which is right here. So once I figure out this is the point, can I then go further? I can. Can I say 2 comma 4 will lie on the same this thing? Yes. Which means कि ये जो मेरी line है vertical line इसके ऊपर वाली ये मेरा path है इस IC का. Just to make sure that I'm correct, let me check if this is the part which is not part of this IC. इस वाले पे मेरा ये वाला point क्या होगा? Let me call this point 1. Point 1 will be 2 comma 1. If I take a 2 comma 1 का point, then utility will be minimum of 2 plus 1 3 comma 2 into 2 4. Minimum is 3. इस पॉइंट पे मेरी यूटिलिटी कम है इससे. इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाला पॉइंट सेम आईसी पे हो ही नहीं सकते. इसका मतलब इस वर्टिकल लाइन में से मैं किंक के जो किंक वाली लाइन है उसके नीचे वाली लाइन को हटा सकती हूँ. एंड आई कैन डू द सेम फॉर ऑल माई लाइन्स बिकॉज ऑल आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न. सो माई कर्व इज दिस. If my curve is this one, logically the next part will be this one, but let's prove it. अब यहाँ पे हमारे पास ये एक indicative point क्या होगा? What would be this point? Let's figure out what would be this point. This point will be, let's say, for the same utility of 4, if I take x2 to be equal to 1, then what is the value of x? y to be equal to 1, then what is the value of x? तो मैंने क्या किया? मैंने 4 लिखा. Minimum of x plus y, x plus 1, comma 2x. Right? What is the minimum value here? For it to be 4, x should be minimum 3. x should be a minimum of 3. तो जैसे ही मैंने 3,1 का पॉइंट लिया तो मुझे पता लग गया कि 3,1 पे आई एम ऑन दिस लाइन एंड दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई IC. एंड सिमिलरली अ पॉइंट लाइक 4,0 will also be a part of my IC, and that is why I can see that this is my IC. अब इसको हम देखते हैं कि हमने इसको क्यों रिजेक्ट किया. आप इसी मेथड से इसको भी देख सकते हैं ना, उसको क्यों रिजेक्ट किया. जैसे हमने इसमें पॉइंट लिया 1,3. So 1,3 को आप पुट इन करो. 1 plus 3 is 4. 2 into 1 is 2. So 2 is the minimum, which means it is going to be lying on our lower IC, which is why I fixated that my IC is going to have this shape. Okay. Now I know कि थोड़ा confusion है. Let me clarify. Basically हम क्या कर रहे हैं? हमने सबसे पहले एक किंक वाली लाइन निकाली. हमने ये किंक वाली लाइन इसलिए निकाली कि हमें पता लग जाए कि हमारे सारे किंक्स यहाँ पे लाया करते हैं. उसके बाद हमने एक कर्व्स बनाए जो ऐसे हैं और दूसरे कर्व बनाए जो ऐसे हैं. अब जब आप लेते हो u टू बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ x प्लस वाई कॉमा 2x, इस लाइन को अगर मैं यहाँ पे किंक बना दूं तो इस लाइन में से या तो ये पार्ट मेरा रिजेक्ट होगा इसके अंदर, क्योंकि मिनिमम या तो ये होगा या ये होगा, दोनों तो हो नहीं सकते ना. मिनिमम या तो ये होगा या ये होगा, दोनों तो हो नहीं सकते. तो मुझे पता है मुझे एक पार्ट को रखना है और एक पार्ट को रिजेक्ट करना है. सो व्हेन आई एम डूइंग दिस एक्सरसाइज तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि कौन सा पार्ट हम रख रहे हैं. जो हम पार्ट रख रहे हैं उसका दूसरा पार्ट तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा. सिमिलरली इस लाइन के अंदर भी अगर मैं परफेक्ट अपनी किंक लाइन बना दूं तो मुझे पता है या तो मेरा ये वाला पार्ट रिजेक्ट होगा या ये वाला पार्ट रिजेक्ट होगा, दोनों पार्ट मेरे कर्व के नहीं हो सकते. इसीलिए मैंने देखा यहाँ पे इसको कि भाई ये वाला पार्ट है कि ये वाला पार्ट है. लॉजिकली अगर आपका ये वाला पार्ट एक्सेप्ट हुआ है तो आप ये वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि देन तो IC विल नॉट इवन मेक सेंस. विच मीन्स लॉजिकली अगर आपका ये वाला पार्ट एक्सेप्ट हो गया है तो ये वाला पार्ट ऑटोमेटिकली आपका एक्सेप्ट होगा. But we just wanted to show it through points, and that's why we have done this exercise and we have taken it to be like this. Now for the people who did not understand in the first go, let me take the same example one more time. U is equal to minimum of x plus y comma 2x. ये curve है ना मेरा. The first point is I'm making a kink. Kink मुझे पता लग गया कहाँ पे है, on the 45-degree line. The second thing I do is I put u is equal to x plus y. हाँ,
ये मेरी ऐसी लाइन आ गई। इसमें या तो मेरी ये रिजेक्ट होगी या ये रिजेक्ट होगी, राइट? इसमें या तो मेरी ये रिजेक्ट होगी या फिर ये रिजेक्ट होगी। सो एक्चुअली यू नो बिफोर इवन मूविंग ऑन, लेट मी सी व्हाट विल गेट रिजेक्टेड और नॉट। लेट मी टेक अ पॉइंट लाइक 2,2, क्योंकि किंक पे तो हमारे पास दोनों इक्वल है ना, किंक इज x इज इक्वल टू y, सो किंक इज एक्चुअली लाइंग ऑन अ 45 डिग्री लाइन, तो मैं पॉइंट 2,2 ले सकती हूँ। तो मैंने जैसे ही पॉइंट 2,2 लिया, मेरी यूटिलिटी आ गई 4। So for a utility of 4, I want to see whether this is going to get accepted or this is going to get accepted. So for a utility of 4, अगर मैं इस कर्व को प्लॉट करती तो मुझे पता है या तो वो पॉइंट होता 4,0 या फिर वो पॉइंट होता 0,4, राइट? आई होप यू गाइज आर विद मी। मैंने बोला कि पहले हमने किंक फाइंड आउट किया, किंक इज x इज इक्वल टू y। आई टुक अ रैंडम पॉइंट लाइक 2,2। 2,2 को जब मैंने यहाँ पे पुट इन किया तो मुझे पता लगा इस पॉइंट पे यूटिलिटी है 4 की। 4 को जब मैंने इस कर्व में पुट किया एज अ यूटिलिटी ऑफ 4, देन आई नो आई हैव 2 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस 4,0 और 0,4. Just to explain you how I did this one more time, let me take one more example. So let me take the kink point as 3,3. Why are they equal? Because x is equal to y. Why are they equal? Why am I taking 3,3 and not 3,4? Because the kink is lying at 3,3 and not 3,4. अगर ये x is equal to y की जगह 2x is equal to y होता या x is equal to 2y होता तो मुझे उस रेशो में अपना हाइपोथेटिकल बंडल लेना पड़ता, लेकिन अभी मेरा जो है वो x is equal to y है, तो मैं किस रेशो में लूंगी? इक्वल में। सो 3,3 को मैंने इस फंक्शन में डाला तो मेरे पास यूटिलिटी क्या आई? 9, राइट? अब मैंने इस फंक्शन में यूटिलिटी ऑफ 9 के बंडल्स चाहिए मुझे, 2 एक्सट्रीम्स, तो वो कौन से होंगे? 0,9 and 9,0, which is going to be my another line out here. So either 9,0 or 0,9. अब मुझे फिगर आउट करना है कि मेरी ये लाइन एक्सेप्ट हो रही है कि ये हो रही है। It's simple. Let me take that. So let me take point like 0,4 first. 0,4 को मैंने यूटिलिटी में डाला। It's a minimum of 0,4 is 4. 0 plus 4 is 4. 2 into 0 is 0. Minimum of this is 0. It's not 4. इसका मतलब ये वाला पार्ट तो मेरा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया। बट टू सी दूसरा पार्ट मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, मैं 4,0 भी एक पॉइंट डालूंगी, तो उसमें मेरी यूटिलिटी क्या होगी? मिनिमम ऑफ 4 plus 0 is 4, 2 into 4, which is 8. The minimum of 4,8 is 4, which is what I wanted. I wanted another point with a utility of 4, क्योंकि अगर 2,2 पे भी 4 की यूटिलिटी है और 4,0 पे भी 4 की यूटिलिटी है, इसका मतलब 2,2 and 4,0 आर लाइंग ऑन द सेम IC, है ना? क्योंकि दोनों के पास सेम यूटिलिटी है, तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, तो इसका मतलब मेरा ये आ गया और ये वाली मेरी लाइन रिजेक्ट हो गई। सो ऑलरेडी आई नो कि मेरी पास ये वाली लाइन तो है ही है। अब आपको पता अगर ये वाली लाइन है तो ये वाली लाइन तो होगी नहीं, पर आपको प्रूव करना है तो आप इस पे आते हो। लेट्स कम टू दिस ऑल्सो। अब हमने थर्ड स्टेप क्या किया? इन द थर्ड स्टेप आई पुट u to be equal to 2x. Now when I put u to be equal to 2x, I know my curves are like this and I have a kink line. अब मेरे कर्व्स ऐसे हैं तो या तो ये रिजेक्ट होगा या ये रिजेक्ट होगा। क्या करूं? मुझे पता है कि यहाँ पे पॉइंट है 4, यहाँ पे पॉइंट है 4, 1 2 3 4 ऐसे ही होगा ना। यहाँ पे है पॉइंट 4 विच इज 4,0 अगेन, राइट? सो इफ आई टेक दैट पॉइंट, सो I want to find a utility of 4 here. If I want to find a utility of 4 here, तो इस पे क्या पॉइंट आएगा मेरा? इसके अंदर मेरा पॉइंट आएगा 2,0. If I want a utility of 4, मेरे पास utility of 4 मुझे चाहिए ना, मैं सेम IC का पॉइंट निकालना चाह रही हूँ ना। सेम IC का पॉइंट निकालने के लिए तो मुझे u to be equal to 4 चाहिए होगा, तभी तो सेम IC होगा अगर सब में यूटिलिटी सेम होगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा 4, तो मेरे पास x क्या आया? 2. So for when we are at 2,0, which is the point right here in the bottom, 2,0, utility will be minimum of 2 plus 0 2, 2 into 2 4, but the minimum is 2, which means this point is not lying on the same IC, which means ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मेरा सेम IC का हो ही नहीं सकता। अगर ये वाला पोर्शन मेरा सेम IC का नहीं है तो चांसेस है कि ये वाला पोर्शन मेरा सेम IC का हो। ये वाले पोर्शन के सेम IC के लिए मैं क्या करूंगी? मुझे पता है कि हमारे पास इस IC के लिए हमारे को जो पॉइंट चाहिए, for this particular IC I need a point like यहाँ पे 2,2 है तो यहाँ पे पॉइंट will be like 2,3.
If here the point is 2, 2, here the point will be 2, 3, right? 2, 2 तो मेरा kink ही था ना, तो kink I've started the entire exercise with this 2, 2. तो अगर ये 2, 2 है तो यहाँ पे 2, this will be 2, 3, right? So let's take a point like 2, 3 and put it back in the curve. 2 plus 3, 5, comma 2 into 2, 4. Minimum of 5, 4 is 4, which means this part is actually lying on the same IC. This part is actually lying on the same IC, right? So my curve becomes what? My curves become this and this. My curve becomes this and this. And this is how my min function is taken care of. अब यही फंक्शन में अगर आपको बोलता क्वेश्चन कि आप इसका मैक्स फंक्शन बनाओ, तो जो पार्ट्स आप मिन फंक्शन में बनाते हो तो आप ऑटोमेटिकली कुछ पार्ट्स रिजेक्ट कर रहे हो ना, तो जो पार्ट आप रिजेक्ट कर रहे हो वो आपका मैक्स फंक्शन बन जाता है, क्योंकि अगर ये मिनिमम है तो उसका ऑपोजिट मैक्सिमम है। अगर ये वाला पार्ट मिन में नहीं था तो ये वाला पार्ट मैक्स में होगा, अगर ये वाला पार्ट मिन में नहीं था तो ये वाला पार्ट मैक्स में होगा। सो मैक्स फंक्शंस आर अ पोलर ऑपोजिट ऑफ मिन फंक्शंस। तो कभी भी अगर आपको मैक्स फंक्शन निकालना है देन ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड आउट द मिन फंक्शन एंड मैक्स फंक्शन आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, मैक्स फंक्शन विल कम automatically. Let's do the next one, which is our next function, which is u is equal to minimum of 2x plus y, comma 2y plus x. So first step, kink. 2x plus y is equal to 2y plus x implies that the kink is at x plus y. तो किंक तो मेरी आ गई जी 45 डिग्री की लाइन। स्टेप 2, u is equal to 2x plus y. Let's find out. Let's take the point as 2, 0. A point of 2, 0 मुझे देगा यूटिलिटी 4 की, ठीक है। तो 2, 0 और 0, 4 जो है वो सेम आईसी पे लाई करेंगे, right? So my ICs for this are a little more steeper, because 2, 0 and 0, 4 are lying on the same IC. अब इसके अंदर मैंने बना दी अपनी किंक लाइन टू फिगर आउट कि कौन सा वाला पोर्शन हम लेंगे ना। लेट्स टेक अ किंक एट अ पॉइंट लाइक 2, 2. सो 2, 2 में हमारे पास क्या यूटिलिटी आएगी? 2 into 2 is 4, 4 plus 2 is 6. Similarly 2 into 2 is 4, 4 plus 2 is 6. So at a 2, 2 from this function my utility is 6. My utility is 6, है ना। अब 6 की यूटिलिटी के लिए मेरे पास इस कर्व के हिसाब से कौन सा पॉइंट होगा? I will have a point like 3, 0 on one axis and 0, 6 on the other axis. ठीक है, तो मैंने ये वाला पॉइंट लिया, इस पॉइंट को मैं मार्क कर रही हूँ 2, 2. तो यहाँ पे मेरे पास इसका पॉइंट है 3 और यहाँ पे इसका पॉइंट है 6. 3, 0 and 0, 6. Let's put 3, 0 here. 2 into 3, 6. 6, 0 is 6. 2 into 0 is 0. 0 plus 3 is 3. So इससे मेरी यूटिलिटी क्या आ रही है? 3. इसका मतलब ये वाला पॉइंट नहीं हो सकता. So 3, 0 can't be part of my IC. 0, 6. 2 into 0 is 0. 0 plus 6 is 6. 2 into 6 is 12. 12 plus 0 is 12. Which is why now my minimum is 6, which means that these points are going to lie on the same IC. So this point will not lie on the same IC, but 0, 6 will lie on the same IC. अब मेरे पास ये आ गया, तो मुझे एक्चुअली क्या करना है? मैं थर्ड निकालूंगी u to be equal to 2y plus x. इसके अंदर what are the points I'll have? I will have the points like 4, 0 and 0, 2. इसके अंदर my curves will be a lot more flatter. I will still draw the kink. इसके अंदर मेरा ये वाला पोर्शन होगा। आप इसको फिगर आउट कर सकते हो अब तो, because you've learned how to. So then if I need to then draw my IC, what is my IC going to look like? My IC will have this steep and this flat, this steep and this flat, this steep and this flat. And इसका अगर मैं मैक्स फंक्शन का बनाऊं तो क्या आएगा? पोलर ऑपोजिट. मिन फंक्शन के अंदर क्या है? This steep and this flat,
this steep and this flat, and max function will be polar opposite, in which it will have this flat and this steep, this flat and this steep, and so on and so forth. This is for my min function and this is for my max function, right? Okay, so if you did not understand this, I would say that you stop the video, you do this question one more time yourself and figure out the steps, what I did and everything, and then you restart the video because I will do one more example. Okay, now let's continue. ऐसा करते हैं, 2 एग्जाम्पल्स और करते हैं. वैसे तो आपको मिन फंक्शंस, किंक फंक्शंस समझ में आ गए होंगे, बट लेट्स डू 2 more examples. Next one is u is equal to minimum of x, comma 2x plus y. तो जैसे कि हमने पहले किया था, सबसे पहला हमारा स्टेप होता है किंक निकालने का. किंक में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कॉमा इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ द कॉमा. x is equal to 2x plus y. This implies minus x is equal to y or x is equal to minus y. Right, which means that हमारा जो ये वाला प्लेन होता है जिसमें हम गुड लेते हैं, इसके अंदर हमारा किंक एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर इसके अंदर एग्जिस्ट करता तो उसके अंदर तब होता जब x और y दोनों पॉजिटिव हैं. सो दिस इज वेयर माई x and y आर 0 ना. This is here x and this is y here. So if x is 2, then y has to be minus 2. So if x is 2, y has to be minus 2, which means my kink should be here. If x is 3, my y is minus 3. या फिर उल्टा लो, जब y 2 है तो x minus 2 है, somewhere here. अगर y 3 है तो x minus 3 है, somewhere here. So this line here will be my kink line, जो कि 0 0 के साथ हमारी करेगी. So this less line will be my kink line, you know, passing through 0 0 or something. But ये हमारा पॉजिटिव क्वाड्रेंट में नहीं लाई कर रहा, जहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव हैं. क्योंकि यहाँ पे लाई नहीं कर रहा, इसलिए नाउ आइडियली I don't know what to do next, right? I'm confused. But क्योंकि हमने steps learn कर रखे हैं कि हमें क्या करने हैं, let's anyways generally follow the steps and see what happens. है ना, करते हैं, देखते हैं. So now let us put u to be equal to x. ये तो मेरा न्यूट्रल वाला फंक्शन है ना. इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर the ICs are like this. Remember? हमने पहले करे थे, the ICs are like this, है ना. Step 3, we put u to be equal to 2x plus y. 2x plus y. Let's take any point. Let's take a point like 2, 0. 2, 0 is going to give me a utility of 4, है ना. तो वो hamaरा कौन सा point होगा जो मैं utility 4 देगा, 0, 4. So 2 here and 4 here are lying on the same IC. So ये मेरे ICs हैं, right? Let's draw them all together in a single this thing. So right now I don't know where my kinks are lying, क्योंकि kinks जो है मेरे पॉजिटिव में है ही नहीं. ये मेरे पास है वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस u is equal to x की, और ये मेरे पास है डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइंस फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब मुझे ये फिगर आउट करना है कि मेरा IC कौन सा है, मेरा IC कौन सा है. लेट्स टेक अ पॉइंट, लेट्स टेक दिस पॉइंट, ठीक है. लेट्स से दिस इज 2. So this point here right now is 2. Comma क्या होगा? What will be comma with? कुछ भी point हो सकता है, कुछ भी point हो सकता है, because this is like a straight downward sloping line. It can have any combination. Let's say this point is 2, 3. If this point is 2, 3, then first is kink, I don't know. Second, I don't know where it is. Second is u is equal to x, which means that if x is 2, चाहे वो 2, 0 में हो, चाहे वो 2, 3 में हो, my u is equal to 2 there. ठीक है, so my utility is 2 there. The third is u is equal to 2x plus y, which means my utility there is 2 into 2 is 4, 4 plus 3, 7. So is the utility of 2 and 7 में से minimum क्या है, 2. So अगर मैं इसको minimum वाले function में put करूँ,
तो यहाँ पे मेरी है x, 2x plus y, which means here since x is 2, that implies my utility is 2. So that means a point like 2, 0 and a point like 2, 3, will they lie on the same IC for a min function? Will they lie on the same IC for the min function? Yes, they are going to lie on the same IC for the min function. क्यों? क्योंकि मेरे को अगर मैं यहाँ पे 2, 0 डालूँ या मैं 2, 3 डालूँ, my utility is still coming out to be 2, which means that this point and this point both are lying on the same IC. If these 2 points are lying on the same IC, then this is my indifference curve. My indifference curve is nothing actually but u is equal to x. जो u is equal to 2x plus y है उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, वो हमारा min के IC के अंदर आ ही नहीं रहा है, वो हमारा min के IC के अंदर आ ही नहीं रहा है. Which means what I'm trying to say is कि if this was my kink line, then my ICs actually are negative positive दोनों प्लेटफॉर्म पे है और मेरे पास ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, तो जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है वो वैलिड होगा इसके बाद. बट सिंस मैं सिर्फ इसी क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रही हूँ, इसीलिए मेरे पास जो कर्व्स है वो कौन से हैं, वो सिर्फ u is equal to x के हैं. अगर if there's slight confusion, let me take one more example. Let's take any point here. ठीक है, let me call this point 3, 2 and let us understand कि इस पे यूटिलिटी क्या होगी और कैसे होगा. ठीक है, u is equal to minimum of 3, 3 into 2 6 plus 4 8. Minimum is 3. Minimum is 3, which means कि मेरी जो यूटिलिटी है वो किससे डिफाइन होगी, सिर्फ और सिर्फ x से. इसका मतलब इसका तो कोई रोल ही नहीं है. अब मैं आपको एक इंट्यूटिव तरीका सिखाती हूँ. ये x है, ये 2x है, फिर उसके ऊपर प्लस y है. y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी. मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0. y की मिनिमम वैल्यू 0 होगी ना, तो आप कोई भी पॉइंट ले लो x का, 5, 10, 15, 20, 2, 3, any point, x will always be less than 2x. मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, इट्स अ min फंक्शन. min फंक्शन का मतलब है मुझे किसी भी टाइम पे ये देखना है कि इस वैल्यू में से और इस वैल्यू में से, लेफ्ट हैंड साइड में से और राइट हैंड साइड में से, दोनों में से कम कौन सा है. एक में है टर्म x, दूसरे में है टर्म 2x प्लस y. y नेगेटिव तो नहीं है ना, हम नेगेटिव वैल्यूज की बात ही नहीं कर रहे. y हमेशा 0 या पॉजिटिव रहेगा. तो जो मिनिमम वैल्यू है y की वो क्या है, मिनिमम वैल्यू इज 0. If the minimum value is 0, then think about it, x is also always positive. Wouldn't x be always less than 2x? x अगर हमेशा पॉजिटिव है, जो कि हम अज्यूम करते हैं हमेशा पॉजिटिव है, तो x तो हमेशा 2x से कम होगा ही होगा ना. तो जब मैं इसका कर्व बना रही हूँ तो ये वाला पोर्शन मैटर ही नहीं करता, क्योंकि x जो है वो हमेशा 2x से कम है. इसीलिए जो मेरा मिन कर्व बनेगा वो हमेशा सिर्फ u is equal to x से बन जाएगा. This thing doesn't even matter. This portion doesn't even matter, right? Let's take one more example. Now I know you guys must be a little overwhelmed, thinking, oh my god, ये तो कभी समझ आएगा कभी नहीं आएगा. Not true. आपके ना एग्जाम्स में 5-6 पेटेंटेड फंक्शंस होते हैं, वो मैंने यहाँ पे कर लिए हैं. तो अगर आपको ये 5-6 पेटेंटेड फंक्शंस याद भी हो जाते हैं ना, और बेसिक आइडिया है कि कैसे स्टेप्स होते हैं, यू आर सॉर्टेड फॉर योर एग्जाम. ठीक है, बट ये जो 5-6 कर्व मैं यहाँ पे बना रही हूँ, 4 मैंने इस वीडियो में करे, 1-2 मैं आपको टेस्ट में दूंगी, वो अगर आपको आते हैं देन यू आर प्रीटी सॉर्टेड. तो ये वाले आपको अच्छे से करने बहुत जरूरी है. ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट वन. मिनिमम ऑफ 2x minus y, 2y minus x. Very, very easy and very, very interesting. First, 2x minus y should be equal to 2y minus x, which means x is equal to y. So my kinks are lying on the 45-degree lines, है ना, where x is equal to y. This line is the line which carry my kink. Second part, u is equal to 2x minus y. माइनस y. You know कि x जो है वो गुड है, y जो है वो बैड है. It's a good bad combination, which means that my curve is upward sloping. My curve is upward sloping.
Let's take a couple of points. Let's take a point like 2, 0. 2, 0 is 4, 0. It gives me a utility of 4, which is, let's say, this point here, 2, 0. When I go from a 2, 0 to 3, 0, what happens? My utility becomes 6, right? Right? When I want a utility of 4 only, what are the other points I can look at? Can I look at a point like 3, 2? Yes, I can. What other point can I look at? Can I look at a point like 4, 4? So you see, my y is increasing at a higher rate as compared to my x. My y is increasing at a higher rate as compared to x. x मेरा थोड़ा slow बढ़ रहा है, y मेरा थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, which means that my slope of the line is like this. It's not closer towards the x-axis. ये तब x axis के ज़्यादा close होता अगर मेरा change in x जो है वो change in y से ज़्यादा होता. Now take a moment, pause the video, think about it. अगर x में change ज़्यादा होता as compared to y, then the curve would be closer to the x axis. लेकिन क्योंकि मेरा change y में ज़्यादा है as compared to x, that is why my curve is closer to the y axis. ठीक है? अगर समझ नहीं आया पॉज करो, एक बार दोबारा सुनो, समझ में आ जाएगा. Third one, u is equal to 2y minus x. Since I want to draw the diagram in the same one, let me just change my color. Let's take an example. 2, 0. 2, 0 के अंदर हो जाएगा 2 into 0 is 0 minus 2, u is equal to minus 2. Here u is equal to minus 2. So I don't want to go there. Let's take another point. 0, 2. 0, 2 is 2 into 2 is 4 minus 0. Utility is of 4. What are the other points? The other points will be 2, 3. Yes? 2 into 2 is 4. 3 into 2, so 3 into 2 is 6 minus 2, 4. Ulte kar lo na sare points. So 3, 2 and then 4, 4 and so on and so forth. So 3, 2 का क्या मतलब हुआ? अब change in y is more than the change in x. Change in y is more than the change in x. But they're also upward sloping. They're also upward sloping. But here now, this line will be closer to the x-axis. This line will be closer to the x-axis. So actually, if you look at it, my kinks are all here. So my IC will be this and this. ये पोर्शन और ये पोर्शन मेरा मैक्स का होगा, ये पोर्शन और ये पोर्शन मेरे मिन का होगा. ये वाली चीज़ अब आपको इंट्यूटिवली आनी चाहिए थी. अगर नहीं आए तो आपको ये वीडियो दोबारा करनी पड़ेगी. मैंने जब ये कर्व्स बनाए तो आपको ये देखते ही पता लगना चाहिए होना चाहिए था कि ये मेरा आईसी होगा मिन फंक्शन के लिए. क्यों? क्योंकि मिन फंक्शन के लिए मेरे ये वाले आईसीज हो ही नहीं सकते. क्यों नहीं हो सकते? टेक अ पॉइंट. ये किंक है ना, लेट दिस किंक बी 4, 4. 4, 4 के बाद आप ये वाला पॉइंट लो, येलो लाइन पे. येलो लाइन पे है 4, 4 इज गिविंग मी अ यूटिलिटी ऑफ 4 into 2 is 8 minus 4 यूटिलिटी ऑफ 4. ठीक है. उसके बाद मुझे इस येलो लाइन पे x ज़्यादा चाहिए. इफ x is 6 then and I need a utility of 4, then I need 10, 5. So my point will be 6, 5. How? 5 into 2 is 10. 10 minus 6 is 4. So this point is 6, 5. This point of 6, 5 is giving me a utility of 4. Right? Similarly here, this point of 5, 6 is also going to give me a utility of 4. So 6, 5 will be here and 5, 6 will be somewhere here. These 3 points are lying on the same IC because these 3 points are all giving me a utility of 4, which is why this should be my IC. Now to say कि मेरा ये वाला IC क्यों नहीं होगा, रिजेक्शन भी देख लेते हैं एक बारी. इस पॉइंट को देखते हैं. Let's look at this point. This point will be something like ये 4 है, ये 2 है, तो 3 होगा बीच में. ये point 3 होगा बीच में, right? This is this line, which is giving me a utility of 4. So let's take a point with 3, 2. So 3, 2, when you put it here, 3, 2, when you put it here, what is it giving me a utility of? Let's see. So 3, 2 मैंने यहाँ पे डाला. 3 into 2 is 6. 6 minus 2 is
4, 3 into 2 मैंने यहाँ पे डाला, 2 into 2 is 4, 4 minus 6 is 4 minus 3 is 1. Minimum of 4 and 1 is 1, which means this point will lie on a curve where utility is equal to 1, right? Again, let's reiterate this one कि यहाँ पे क्यों है. Let's take a point like 6, 5. 6, 5 मैंने यहाँ पे डाला. 6, 5 is 12 minus 5, which is 7. 6, 5 is 10 minus 6, which is 4. Minimum of 7, 4 is 4. That means the utility is of 4, which is what the curve's utility was. Take another one. The example of 5, 6. 5, 6 में आपने क्या किया? 5, 6 में 2 into 5 is 10 minus 6, which is 4. 2 into 6 is 12 minus 5, which is 7. Minimum out of 4 and 7 is again 4. So points like 5, 6 and 6, 5 are giving me order utility of 4, जो कि मुझे 4, 4 पे point दे रहा है. So my points like 4, 4, 5, 6 and 6, 5 are going to lie on the same IC, which is my IC shape is this way, right? और points जो बाकी हैं, which is 3, 2, 2, 3 are giving me a lesser utility. इसका मतलब वो दूसरे indifference curve पे होंगे, which is going to be on a lower indifference curve, which is why वो मेरे part of IC नहीं है, right? So this is all we have to do in kinks. Like I said कि kinks के आपके थोड़े से ही functions हैं जो important होते हैं. हमने 4 यहाँ पे कर लिए, 1-2 हम आगे कोर्स में कर लेंगे, and that is sufficient. इसके अलावा आपके अनोखे kink functions और नहीं आते हैं, but जो हमने यहाँ पे किए वो बहुत ज़्यादा important है. एक बार दोबारा कर लेना, 2 बारी में नहीं होता, तीसरी बारी में कर लेना, but kink functions कर ज़रूर लेना. All right, and अच्छे से. Thank you.